Good morning, class 10. As we were continuing with chapter number 12, Electricity in Science, the next topic is the most important law of this chapter, that is your Ohm's law. Now, what is Ohm's law? Ohm's law states that whenever there is a potential flowing in a circuit, that means यदि कोई पोटेंशियल हमें इस सेल या बैटरी से मिल रहा है तो जो भी पोटेंशियल हमें मिलेगा वो पोटेंशियल बेसिकली उसके करंट के प्रोपोर्शनल होगा. दैट मीन्स current flowing in this circuit will always be proportional to the potential difference of this circuit. हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट वाज V के बारे में बात करी थी, उनके डेफिनेशन पढ़ा था और उसकी यूनिट बात की थी. तो दैट इज़ योर पोटेंशियल जो हमें सोर्स सेल या बैटरी से मिल रहा है. और बेसिकली करंट तब फ्लो होता है जब ये पोटेंशियल चार्जेस के रूप में किसी सर्किट में फ्लो होते हैं. सो ओम्स लॉ comes by the name of a German physicist, George Simon Ohm, and he states that potential difference, that is V, across the ends a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it, provided that its temperature remains the constant. टेम्परेचर क्या रहेगा? बदलेगा नहीं. यदि टेम्परेचर नहीं बदलता है देन इट इज़ कॉल्ड एज ओम्स लॉ. दैट मीन्स V इज़ प्रपोर्शनल टू I. प्रपोर्शनल के साइन को जब हम इक्वलाइज करते हैं तो हमें यहाँ पे एक कांस्टेंट रखना पड़ता है. ये कांस्टेंट हमारा है R. दैट इज़ V इज इक्वल्स टू RI, where you get a ratio of V upon I is equals to R. That is your constant. R is called resistance. It is the property of a conductor to resist the flow of charges through it, and its SI unit is ohm. Either you write it like this symbol or you write it complete OHM, ohm. Now रेजिस्टेंस मीन्स किसी चीज़ को रोकना, करंट के फ्लो को रोकना. तो दैट इज़ व्हाट यू कॉल्ड एज रेजिस्टेंस. सो इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ all the wires, whether it is a good conductor, whether it is a moderate conductor, but every metallic conductors or anything, first of all resist the flow of current. कोई भी कंपोनेंट यदि इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगा है तो वो सबसे पहले करंट को रोकता है. यदि करंट उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है तो वो उसे ओवरकम कर जाता है और करंट फ्लो होना चालू हो जाता है और वो रेजिस्टेंस उसको रोक नहीं पाता. पर हर कंडक्टर में रेजिस्टेंस होता है. इफ़ आई डिफाइन 1 ohm, देन it will be if the potential difference across the two ends of a conductor is 1 volt and the current through it is 1 ampere, then the resistance R of the conductor is 1 ohm. 1 ओम का रेजिस्टेंस हम कब बोलते हैं? जब किसी सर्किट में किसी कंडक्टर के थ्रू 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जिसकी वजह से 1 एम्पियर का करंट फ्लो होता है तो उसे हम 1 ओम कहते हैं. इट इज़ बीइंग डायरेक्टली स्टेटेड दैट इफ़ R इज़ डबल्ड, यदि R को आप दुगना करोगे तो करंट विल बिकम हाफ. This is a certain relation that even you can get it from Ohm's law. V upon I is equals to R. That means R and I has a relation inversely proportional. If you increase R, I will be decreased. If you decrease R, I will be increased. A component used to regulate current without changing the voltage source is called variable resistance. ऐसा कोई कंपोनेंट जो करंट को रेगुलेट करता है पर वोल्टेज सोर्स को कोई चेंजेस नहीं लाने देता,
without changing the voltage source is called variable resistance. It is also called rheostat. इसे आप rheostat भी कह सकते हैं. A device called rheostat is often used to change the resistance in the circuit. किसी भी circuit के resistance को यदि हमें change करना है तो you can even use variable resistance, or even you can say it as rheostat. So according to Ohm's law, if you plot it in a graph, x-axis representing the current and y-axis representing the potential difference, then as you go on increasing the potential, the current will be increased. So you will always get a straight line in this type of graph. That means V is directly proportional to I. Hence you can say that V is proportional to I. That's why you will always get a straight line. And that is what you called as Ohm's law.